हेलो एवरीवन, वेलकम टू चार्ट ऑफ द डे। माई सेल्फ राय मासूम रजा फ्रॉम ट्रेडर स्मिथ इंडिया। सो आज के चार्ट ऑफ द डे के लिए आई हैव सिलेक्टेड टू स्टॉक्स। सो लेट्स सी हाउ these two stocks are appearing on the chart. So this is the daily chart of MPHASIS, and by looking at the chart we can see that stock has been in the consolidation phase from past few weeks, and after that it has also breached its 21 DMA and 50 DMA यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद स्टॉक को यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 वीक से वी कैन सी दैट देयर हैज बीन सम साइडवेज ट्रेडिंग सेशन हैज टेकिंग प्लेस। और बट आफ्टर इट साइडवेज ट्रेडिंग सेशन आज जो स्टॉक्स ने एक बुलिश कैंडल फॉर्म किया, दैट हैज गिवन द पॉजिटिव वाइब, और स्टॉक हैज रिक्लेम इट्स 50 डीएमए एंड इट्स 50 डीएमए साइमल्टेनियसली विथ अबव एवरेज वॉल्यूम। यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम भी अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ ये आज रिक्लेम किया है। So and if you look at its buyer demand, it is B minus, and its EPS strength is 52, which is not that great. If you look at its number of funds holding in the last quarter, that has increased to 5.12%. The next stock is KARURVYSYA Bank. So KARURVYSYA Bank has also in the consolidation phase from past 2.5 months, you can say, because after forming its recent high on 30th of July, the stock has been under the sideways phase, or we can say करेक्शन फेज ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स। बट यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 200 के पास जो ये जो रेंज जो दिख रहा है, यहाँ पर 200 के पास इस स्टॉक को थोड़ा सपोर्ट मिला है, और इस सपोर्ट के थ्रू ये स्टॉक वहां से एक बाउंस बैक देखने को मिला है इस स्टॉक में, और स्टॉक हैज ट्राइड टू मूव अपसाइड एज वेल। और आज के ट्रेडिंग सेशन में द स्टॉक हैज रिक्लेम इट्स 100 DMA, जो हरा वाला लाइन है 100 DMA, एंड एज वेल एज इट्स 21 DMA एज वेल। सो आज के ट्रेडिंग सेशन में द स्टॉक हैज रिक्लेम्ड इट्स 100 DMA एंड 21 DMA, और 50 DMA के पास इसको थोड़ा सा आज रेजिस्टेंस मिला। एंड ये जो रिक्लेम किया है और ये जो बुलिश कैंडल फॉर्म किया है विथ अबव एवरेज वॉल्यूम, जो कि एक पॉजिटिव साइन भी है। इसका बात करें अगर बैड डिमांड की, तो इट्स बैड डिमांड इज बी, विच इज एक्चुअली गुड, एंड इट्स ईपीएस स्ट्रेंथ इज 96, विच इज ग्रेट। और जहाँ तक इसका हम लोग नंबर ऑफ फंड्स इंक्रीमेंट देख सकते हैं, तो देर इज स्लाइट इंक्रीमेंट इन द फंड एज वेल, विच इज अराउंड 1%। सो आज के चार्ट ऑफ द डे के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे विथ अनदर स्टॉक्स एंड अनदर चार्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।